आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ग्रेडेशन आईलाइनर इन शेड्स ऑफ ब्लैक एंड ग्रे. हाय एवरीवन, मेरा नाम है चांदनी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब. So as always, I've started with clean skin and I've added some MAC Fix Plus to it. I've also used face oil on Jaya's skin as it is very dry. Jaya's got beautiful eyebrows. हल्का सा उसको टच अप कर रही हूँ with an eyeshadow powder. And I'm going to use brow freeze from Anastasia today because I feel eyebrows थोड़ी नीचे की तरफ droop कर रही हैं, so just to set it into place. Also everyone, the brushes that I'm using are from my own brand, the Nari Studio. Do check us out. Eyebrows carve करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ नारी का cut and carve brush because this gives me great precision. And as always, I'm using the Louise eyeshadow base and setting it into place. क्रीज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कूल टोन कलर्स एंड फॉर द स्मोकी आईलाइनर आपको टेप लगाना बहुत ज़रूरी है. आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद डिपॉजिटिंग एन आई शेडो अलॉन्ग द लैश लाइन फॉर नाउ. गाइज, इस लुक को परफेक्टली अचीव करने के लिए बहुत बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिमेन्स दैट द एजेस ऑफ योर स्मोकी आईलाइनर शुड बी completely blended out. Also for blending along the lash line, I am using the Nari blending small brush and इस size का brush इस look के लिए बहुत ही ज़रूरी है. To define the lash line further, I apply an eyeliner and I smoke it out as well. And इस पे मैं black color deposit करती हूँ and I make sure it's perfectly blended into the grey. Starting with the skin now, I start with a primer and of course I conceal the problem area. मैं ये कंसीलर जहाँ पर भी डार्क सर्कल, डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन है हर जगह लगा रही हूँ. एंड नो, जया डज नॉट नीड एन ऑरेंज करेक्टर, सो आई एम स्किपिंग इट. For full coverage foundation today, I'm using one of my favorites, the Nars Longwear Radiant Foundation. I absolutely love it. If you like something slightly heavier, highly recommend this. And I also use some concealer to highlight or brighten up the face. And of course, now it's time for contour and blush. So a good nose contour makes all the difference, and this is a really important step which one should not forget. Using the Nari contour small brush for the same. And once I'm done, it's time to set it with powder. I use the Huda Powder as always. लोअर लैश लाइन पे भी हल्की सी डिटेलिंग करती हूँ. लैशेस लगाती हूँ, नारी की मिंक लैशेस लगा रही हूँ मैं इनके ऊपर, जिसका नाम है वेरा. लिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हाईलाइट ऑन द क्यूपिड्स बो बिकॉज दिस एनहांसेस द लिप ब्यूटिफुली. एंड यूजिंग द NYX ब्राउन लिप लाइनर फॉर अ न्यूड लिपस्टिक. I absolutely love this combination. So do let me know in the comments, guys, what do you think? Would you like to see more of smoky eyeliner or do you prefer the stark winged eyeliner?
And guys, do not forget to subscribe to my channel and turn on the notification button. I promise to be more regular. Thank you for watching.